everyone. Now, there has to be some reason, you know, some method behind this madness. Appeasement, appeasement, appeasement. For how long will we continue to see these parties pushing in for appeasement, Anurag? Does it really help them? You'll have to unmute. Yeah, Deepti, thank you for having me on the show, Deepti. I've been patiently hearing, and you know, one thing that you said very rightly, method, the yardstick is at the center of the discussion, not ki kisko choda. Look at the mindset, Deepti. You don't want to go to the court, you don't want to wait for the system to take a call, but you want to call it for your allies, the people who are having the same political allegiance, the same political partnership, just to save the governments or garner some votes. If you are taking that decision, I think God help. But, you know, also, why Pradeep was getting carried away, Deepti, one interesting fact is, when it comes to Karnataka, the party that Pradeep represents has lost its activists left, right, and center being killed and justice not being served. There are a lot of student activists who have cases in Karnataka for whatever activism they are involved in, but no action or no cognizance taken on these cases politically. 1,200 farmers died in the last 15 months in Karnataka, 100 of them from Hubballi, Dharwad, and I mean, what about the cases in the lives and the families of these farmers? There are a lot of farmers on whom cases are put. So who would discuss about this issue just because the appeasement does not work when it comes to the farmers and the students and the youth? You were not going to act. This is the yardstick that we're talking about. This is the double standard that you're talking about. That members of the political party, especially based on the ideological allegiance and partnership, if they overrule over the system, that is a trend which is very dangerous for the democracy, dangerous for the people, and dangerous for the system and the law and order of the state. I think that's a fair point. And, you know, Pradeep, before I come to you, I must ask this question to Syed Shafiullah Saheb, that there is this, you know, cabinet note, sir, that we've been able to access. There is a heading there which says interministerial consultations. It says the police department, the Department of Prosecution, and the government litigations and law department were consulted and their opinions obtained. And do you know what it says next, Atikur Rahman, Ravindra Singh ji? It says they are of the opinion that these cases are not fit for withdrawal. In spite of that, Shafiullah ji, why did this happen? See, Mrs. Deepti, Mrs. Deepti, first of all, the government has handed over all the cases to the subcommittee of the cabinet. After the cabinet subcommittee has gone into the details of every case, after the recommendation only, it has been the cases have been withdrawn. Please note, यहाँ appeasement किसी का भी नहीं है. What happens in the group riots normally? जब पुलिस पकड़ती है, थोड़े लोग कल्प्रिट्स पकड़े जाते हैं, ज्यादा लोग नॉन कल्प्रिट्स भी पकड़े जाने का चांसेस रहता है. अच्छा. ये सब कमेटी बराबर देखती है, वो रेकमेंड करती है, उसी पे वो प्रोविजन है, लॉ में प्रोविजन है, इसलिए किया जाता है. अभी अपीजमेंट आप कहते हैं, अभी इन लोगों ने, बीजेपी ने जब गुजरात में 11 लोगों को रेपिस्ट को जब वो किया था, किसकी अपीजमेंट के लिए किया था? क्या हमारा इंडिया का ऐसा तरीका है? सब लोग थूक रहे हैं, वो गलत था ना, वो गलत था, वो मामला कोर्ट में गया. इधर क्वेश्चन कर रहे हैं जो नॉन कल्प्रिट्स थे उनको रिलीज करने नहीं. अब शफीउल्लाह जी, सर देखिए, मैं दोबारा वही बात कहती हूँ आपसे. अब आप मुझे बताइए, क्या मोहम्मद आरिफ आप ये कहते हैं कि वो बेगुनाह है, उन पर मतलब गलती से ही आरोप लगाए गए, आप ये कहते हैं तो बोल दीजिए. मैडम, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, सब कमेटी का रिकमेंडेशन देखा जाएगा, पुलिस जो करना है वो पुलिस करेगी. मैं और आप यहाँ बैठ के बात करने से कोई आदमी नहीं. आप पुलिस कब करेगी सर? आपने तो उनके खिलाफ केस को विड्रॉ कर लिया है. आपने केस को विड्रॉ कर लिया है ना. अब क्या होगा आगे? ट्रायल चल रहा है, लेकिन आपने केस को विड्रॉ कर लिया. कैसे मालूम आपको? मैडम आपको कैसे मालूम? मैडम आपको कैसे मालूम जिसका विथड्रॉ किया है वो कल्प्रिट है? आपको कैसे मालूम? तो आप बोल दीजिए वो कल्प्रिट नहीं है ना. बोल दीजिए सर, मैं यही तो आपसे पूछ रही हूँ, इससे मामला सॉल्व हो जाएगा. आप बोल दीजिए आपने उनको क्लीन चिट दे दी है. मैं क्यों बोलूं? मैं सब कमेटी हूं क्या? सब तो आप ही की तो सब कमेटी ने सर. ये देखिए ना, ये पूरा नोट है मेरे पास, ये पूरा नोट है जो कहती है कि पुलिस ने मना किया था ये केस को विथड्रॉ करने के लिए. इसके बावजूद अगर आपकी सरकार इसको विथड्रॉ करती है सर, तो मुझे ये बताइए ना कि क्या चल रहा है कर्नाटक में. आपके
देखिए दीप्ति जी, आपके या मेरे कहने से कोई कल्प्रिट नहीं हो जाता, कोई छूट नहीं जाता। गवर्नमेंट ने सब कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद उसको छोड़ा है, तो वो सब कमेटी ने गवर्नमेंट तो आप ही की है ना सर, आप ही की है ना, कांग्रेस सरकार की है, इसलिए आप ही जवाब देंगे ना। कल्प्रिट नॉन कल्प्रिट हो जाता है। Okay, Atikur Rahman, do you agree with this? Pradeep, I'm just coming to you. Just 10 seconds, Atikur Rahman. Just a small question, दीप्ति। सैफुल्लाह साहब, क्या आप ये बात को एग्री करते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट आज आप दे रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट और सब कमेटी को लगा के बेगुनाहों को पकड़ा था, यही आर्ग्यूमेंट बीजेपी भी देती है दूसरे स्टेट के अंदर? तो ये जो पावर है विड्रॉ करने का केसेस का, ये स्टेट गवर्नमेंट से ले लेना चाहिए। आप ये बात पर एग्री करते हैं? वो अग्री करते हैं, अतिकुर रहमान अग्री करते हैं। प्रदीप, लास्ट 10 seconds to you, प्रदीप। Deepthi, point number one, that the police officially said a dissenting note that the cases should not be withdrawn. The police is the victim here, the accused are the writers. On July 2nd, 2024, the Karnataka government said that criminal always remains a criminal until acquitted by the court. This is Siddaramaia's official statement when they tried to get back the cases of the car sevaks in 1992. Point number two, a fake news spread on your channel by the Samajwadi Party. Yogi Adityanath in 2023 officially in the assembly had said that he's not withdrawn any case, and Samajwadi Party had withdrawn cases against Banaras blast accused, Ayodhya blast accused, and this is the same party which was asking all for right. a You know, ticket Pradeep, for I've Yaqub completely run out of time, but I think we will watch what happens next on that story. We'll continue to watch that, gentlemen.